अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन व नाज़रीन, रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमने एक सिलसिला जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन है जो डॉक्टर की बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड, उसके ज़रिए से और उनके ताबुन से एक हेल्थ के हवाले से, हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से एक कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर रखी है। उसी की एक कड़ी है। आज हमने जो अनाउंस किया था, किडनी के हवाले से हम बात करेंगे कि आया जो है गुर्दे के जो अमराज हैं वो भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। फिर इसमें डायलिसिस है, फिर ट्रांसप्लांट है, दीगर जो मसाइल हैं इनकी पेचीदगियों को जानने की कोशिश करेंगे। और ये रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर जो है हमारा थर्ड सेक्शन है। पहले जो है हमने जनरल हेल्थ टिप्स के हवाले से प्रोग्राम किया, फिर शुगर के हवाले से, और ये थर्ड जो है किडनी अवेयरनेस के हवाले से हमारा प्रोग्राम है, किडनी डिजीज रिस्क सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। और इस पे मैं आपको अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का जो है वो तारुफ करवाता चलूँ। हमें डॉक्टर मंसूर अली जो है उन्होंने जॉइन कर रखा है, जो कि रेनल कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और ब्रेडफोर्ड टीचिंग हॉस्पिटल एनएचएस ट्रस्ट से जो है ये एसोसिएट हैं। हमारे साथ मोहतरम डॉक्टर नवीद ख्वाजा मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो आप भी जो है रेनल स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार हैं नोटिंगम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से। तो मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। हमारे साथ मोहतरमा वजीहा तहनीयत जो है वो मौजूद हैं, जीपी ट्रेनी विद स्पेशल इंटरेस्ट इन वीमेन हेल्थ एंड ब्रेस्ट कैंसर। तो मैं आप तमाम अहबाब को वेलकम करता हूँ। इस सेशन को जो है बाकायदा ओपन करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर वजीहा से कि वो इंट्रोडक्शन पेश करेंगी और फिर इस प्रोग्राम को हम आगे लेके चलेंगे। डॉक्टर वजीहा, आप बात थैंक कीजिए। यू सो मच इरफान भाई। हमें बहुत एक ये अच्छा प्रोग्राम है जो अपने ने अपने आपके साथ एक जॉइंट वेंचर रखा है, और इट इज़ एन इनिशिएटिव फॉर पब्लिक अवेयरनेस regarding health issues, especially based on this Ramadan issue. Sometimes हमें fasting के साथ issues देखने पड़ते हैं। तो ये वर्ल्ड न्यूज़ टीवी चैनल के साथ हमारा थर्ड प्रोग्राम चल रहा है सीरीज का, और नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा 26 को कार्डियोलॉजी का होगा। और हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे जो हर शोबे के हाईली स्पेशलाइज्ड लोग आके अपनी माहिराना राय दें और लोगों के सवालात का जवाब दें। तो होपफुली ये प्रोग्राम भी आपके सारे सवालात के जवाब मुकम्मल तौर से दे सकेगा। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ वर्ल्ड न्यूज़ टीवी चैनल का कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर वजीहा, बहुत शुक्रिया आपका। इस प्रोग्राम को जो है आगे लेकर चलते हैं हम। आपको मैं बताता चलूं कि कार्डियोलॉजी के हवाले से जो है एक चीज़ वो मिस हो गई। 26 को हमारा प्रोग्राम आएगा हर डिजीज़ के हवाले से, तो उसमें भी रेलिवेंट जो भी आपके क्वेश्चन हुए उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फर्दर डिले से जो है वो आगे पहले ही हम डिले हो चुके हैं। तो मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और फिर डॉक्टर मंसूर अली से उसका आंसर जानने की कोशिश करूँ। Hi, my name is Manahil Khan, and what are the causes of kidney disease? Thank you. जी डॉक्टर मंसूर अली, इनिशियल जो है ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ किडनी डिजीज। Thank you very much. Thanks for this question. There are lots of causes for kidney disease, but you need to understand that kidney disease is actually quite prevalent in the society now. It does affect people of all ages, right, from actually young children to as old as 90, 100 years of old. It is important to understand that the kidney disease can be divided into lots of causes, but the most prevalent and most common causes of kidney disease are usually diabetes and high blood pressure. They both go hand in hand. So if you can actually take a survey of the patients who come to the kidney clinics or who are on dialysis, which is actually backed by some evidence and facts that patients on dialysis or patients with chronic kidney disease are usually due to diabetes as one of the number one causes of people or patients actually ending up with chronic kidney disease and end-stage kidney disease. When I say end-stage kidney disease, people are actually on either needing transplant or needing dialysis. Other causes include infections. If you've got recurrent urinary tract infections, there's some genetic causes for the kidney disease, especially if you've got
kidney disease running in the family. I won't go into much details of that, but there are lots of causes of genetic causes, and then you need to actually be identified at a very early stage. There's some problems with urinary tract system where there's blockage due to stones or other problems like malignancy or cancer, which can actually affect the kidney functions and in turn can lead to chronic kidney disease. And then sometimes actually chronic kidney disease could be identified without actually knowing the cause of the chronic kidney disease. You do a lot of tests, lots of investigations, but still not able to find out the cause of the kidney disease. But mostly and mainly the cause of kidney disease is usually diabetes and high blood pressure. Cardiovascular disease is also important because chronic kidney disease, which is short form for CKD, and cardiovascular disease usually go hand in hand. So literally, some patients actually say that, with heart problems can actually also have problems with kidney disease because of the way the kidneys actually get affected by the heart issues. Now, there are some also other causes, especially kind of actually medications. Medications can cause a lot of acute problems, meaning in an acute setting or reversible causes. If you remove the offending agent or offending medication, the kidney function may recover. But sometimes long-term use of medications, especially patients who are actually on long-term painkillers like NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, or patients who are actually on lithium, who may need for their mental health conditions, can lead to problems with chronic kidney disease. So I hope I'm able to answer your question. Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर मंसूर अली. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर हम उसका आंसर जो है वो लेने की कोशिश करेंगे. My name is Ayubi. My question for you today is, what is the difference between acute kidney disease and a chronic kidney disease? Thank you. जी डॉक्टर ख्वाजा, अगर आप इस पे कमेंट्स कर सकें तो प्लीज. Floor is yours. Thank you very much for the question. I think whilst I explain the answer to you, it's very important to explain what kidneys do. And kidneys are actually filters in our body, and they are responsible to remove the waste and the excess toxins that are either consumed by us directly or they are products of metabolism. So now that we know what kidneys actually do, it is quite easy to explain your question with regards to acute kidney injury and then chronic kidney disease. Acute kidney injury is a phenomena where the kidney function drops, but it is reversible and salvageable. And once we have controlled or taken away the causative agent, the kidney function reverses towards normality. Chronic kidney disease, or CKD, is a condition where the kidney function drops but is not completely reversible. The cause of the damage has been present for long enough to leave its mark, and therefore there has been some decline in kidney function. So, and to further explain this, we usually classify kidney disease based on the percentage of function, and when anyone who has a decline in function of less than 60%, and it stays less than 60%, then it is called chronic kidney disease. Of course, we've got several other steps in the chronicity of illness, but I don't think we need to go into the details. I hope I've answered your question. थैंक यू सो मच डॉक्टर मंसूर ख्वाजा. नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर जो है हम अपने एक्सपर्ट से उसका आंसर जानेंगे. जी अस्सलाम वालेकुम. मैं जाहिद भट्टी, चेयर एंड ट्रस्टी ग्लोबल किडनी फाउंडेशन. आज का प्रोग्राम जो ताहिर साहब कर रहे हैं, ये बड़ी ज़रूरी इंफॉर्मेशन का हामिल प्रोग्राम होगा, और इसमें जो इनका आइडिया है कि गुर्दों अमराज जो है जानलेवा है कि नहीं है. ऑफ कोर्स ये बिल्कुल जानलेवा है, और इसमें सिवाय ट्रांसप्लांट की कोई क्योर नहीं है. आप डायलिसिस पे तो रह सकते हैं, बट डायलिसिस जो है परमानेंट इसका हल नहीं है, और सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांट ही इसका परमानेंट हल है. अब जैसे कि मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं 5 साल डायलिसिस पे रहा, और फिर उसके बाद मेरे पहला किडनी ट्रांसप्लांट जो मेरे ब्रदर की तरफ से था जो फेल हो गया, और दूसरा ट्रांसप्लांट जो मुझे फिर 2.5 साल के बाद मेरी किडनी अवेलेबल हुई किसी डिसीज़्ड की, और मैं उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ. और उसी की वजह से फिर मैंने ये ग्लोबल किडनी फाउंडेशन जो है स्टार्ट की.
جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو میں ڈاکٹر منصور آپ سے جو ہے وہ چاہوں گا کہ یہ انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا ہے. زاہد بھٹی صاحب یہ کڈنی فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر بھی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ یعنی کڈنی ہم نے ٹرانسپلانٹ کی، لیکن وہ کہیں جو ہے اس کا نہیں فائدہ ہو سکا، تو پھر دوبارہ جو ہے وہ کرنا پڑا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈائلائسس جو ہے حل نہیں ہے بلکہ ٹرانسپلانٹ ہی جو ہے آخری حل ہے. اس پہ آپ ایگری کرتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. تھینکس زاہد بھٹی، آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہم سب کے ساتھ. یہ بہت ہی پاورفل آپ کی مطلب جو اسٹوری اور میسج بھی ہے اباؤٹ ٹرانسپلانٹ ڈائلسس. اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈائلسس از اے ٹریٹمنٹ فار اینڈ اسٹیج کڈنی ڈیزیز یا کرونک کڈنی ڈیزیز کے لیے. ڈائلسس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو صرف اٹ کیپس یو گوئنگ انٹل یو ایکچولی گیٹ اے ٹرانسپلانٹ. لیکن کیونکہ ڈائلسس آپ نہیں کریں گے تو ڈائلسس مطلب کڈنی مضر اور جان لیوا بیماری ہے. اگر آپ اس کی کمپلیکیشنس کے حد تک آ جائیں، کیونکہ بہت سارے کمپلیکیشنز ہیں کرونک کڈنی ڈیزیز کی. لیکن یہ میں تھوڑا سا ریوائنڈ کروں گا، یہ بہت امپورٹنٹ کہ آپ یہ سمجھیں کہ کڈنی اسٹیجز، جیسے میں کالگ ڈاکٹر خواجہ نے بتایا کہ 1 to 5 ہوتے ہیں کڈنی اسٹیجز. 1 to 3 جب آپ کے 60% ہوتا ہے تو آپ یوزلی آپ کو پرائمری کیئر سیٹنگ میں جی پیز آپ کو مطلب مینیج کرتے ہیں. جب کڈنی فنکشن لیس دین 60 یا لیس دین 30% تک چلا جاتا ہے، 60% پھر جی پی ہمیں ریفر کرتے ہیں کہ مطلب اس کا کوئی علاج ہے، کوئی اور ریورسیبل کاز ہے. اور کاز فائنڈ کرنا یہ اسپیشلسٹ کا کام ہے یا سیکنڈری کیئر ہاسپٹل کا کام ہے کہ وہ فائنڈ کرے کہ کاز کیا ہے. ہائی بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، یا کوئی اور انفلیمیٹری کنڈیشن ہے کڈنیز کی، یا کوئی یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے جس کو آپ ریورسیبل مطلب کر سکتے ہیں کہ کڈنی کی کرونیسٹی زیادہ نہ جائے. اور ایک دفعہ کرونک کڈنی ڈیزیز ڈائگنوز ہو جائے تو بہت 1 to 2% آج جو اینڈ اسٹیج کڈنی تک جاتے ہیں. لیکن ان 1 to 2% کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو سلو کرنا چاہیے پروگریشن، اور وہ آپ میڈیکیشنز یا ریورسیبل کازز کو دیکھ کے کرتے ہیں. اور کبھی کبھار ریورسیبلٹی نہیں ہوتی تو وہ پروگریشن ہی ہوتا ہے. اور جب وہ پروگریشن پہ چلے جائے لیس دین 15%، لیس دین 10%، تو پھر وہ اینڈ اسٹیج کڈنی ڈیزیز یعنی کہ ڈائلسس پہ آتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ نے بہت صحیح کہا کہ ٹرانسپلانٹ از دا آپٹیمل ٹریٹمنٹ فار اینی پیشنٹ ود اینڈ اسٹیج کڈنی ڈیزیز. اور ٹرانسپلانٹ کے لیے ایز اے فزیشین، ایز اے کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ، ایز اے ٹرانسپلانٹ فزیشین، ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایکچولی پیشنٹس کو ٹرانسپلانٹ کے لیے، ینگر پیشنٹس کو جو ہے وہی ٹرانسپلانٹ کے لیے مطلب پریپیئر کریں. میں ایجس نہیں ہونا چاہتا ہوں، لیکن اولڈر پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کے کافی سارے مسائل ہوتے ہیں، کاموربیڈیز ہوتے ہیں. لیکن آج کل آپ مطلب پیشنٹ 70-80 ایئرس تک بھی مطلب ان کی لائف اسپین ہے، تو ان کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ کوئی اور کاموربیڈیز نہیں ہے، کوئی لمیٹنگ فیکٹرز نہیں ہے، تو آپ ان کو بھی ٹرانسپلانٹ کے لیے پریپیئر کر سکتے. ڈائلسس کے یہ کہ ڈائلسس کرنا ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ ٹرانسپلانٹ سے، آپ نے خود نے کہا کہ ٹرانسپلانٹ آپ کے لائف ڈونر سے، آپ کے بردر سے تھا، پھر اس کے بعد وہ فیل ہو گیا. تو یہ ہے کہ بٹوین فرسٹ ٹرانسپلانٹ فیلنگ ٹو اندر ٹرانسپلانٹ جب آپ کو ملے تو یو نیڈ ٹو ہیو ڈائلسس. You cannot actually live without dialysis. So dialysis is a treatment to keep someone going until you actually find transplant. لیکن بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں آپ ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتے، بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، چاہے آپ کے مطلب ویٹ ہو، یا چاہے آپ کا کیا کہتے ہیں ادر ہیلتھ پرابلمس ہو، یا پھر کیا کہتے ہیں کانٹر انڈیکیشنس ہو، کسی کو میلیگنسی یا کینسر ہو. تو اس صورت میں پھر ڈائلسس ہی آپ کو ایکچولی ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ ول جسٹ کیپ یو گوئنگ انٹل وہ ریورسیبل فیکٹرس مطلب اس کے مطلب کم نہ ہو جائے یا ٹرانسپلانٹ کے چانسز امپروو نہ ہو. So I hope I've actually answered some of the questions that was raised in that comment. Thank you. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر منصور علی. یعنی اس میں یہی ہے کہ جو ٹرانسپلانٹ ہے بیٹر دین ڈائلسس جو ہے، اس کو اگر ہم بہتر جو ہے رزلٹ لینا چاہتے ہیں. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں اور پھر ان کا آنسر جو ہے وہ اسپیشلسٹ سے جانیں گے. السلام علیکم، میرا نام ہے ایحان احمد، اور میرا یہ سوال ہے کہ گردوں کے مرض کے خطرات کس کس کو لاحق ہو سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر خواجہ آپ اس پہ اگر کمنٹس کر سکیں. جی بالکل احمد صاحب، ضرور آپ کی اس سوال کے لیے جو ہے آپ کو ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں. میرے خیال میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم پاپولیشن جو ہے نا اس کو ڈیوائڈ کر لیں چھوٹے چھوٹے گروپس میں، تو آپ کو سمجھانا ایزی ہو جائے گا اس آنسر کی ڈیٹیل. مثال کے طور پر لیٹ اسٹارٹ ود جو ایکسپیکٹنگ مدرز ہیں ہماری، حاملہ خواتین یا جو اس سلسلے کی تیاری میں ہیں، ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کچھ اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشنز ہم یوز کرتے ہیں، اس میں سے کچھ جو ہیں وہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر پین کلرز ہیں،
وہ جو یورینری سسٹم ہے یا گردوں کا جو سسٹم ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں پرابلمس کر سکتی ہیں. تو یہ ایک بڑا رسک ہے اور بیبی کی آگے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت بڑا رسک ہے. اسی طرح جو ہماری نوجوان ہیں یا جو مڈل ایجڈ ہمارے پاپولیشن ہے ان کے اندر بڑا ضروری ہے کہ وہ اسموکنگ جو ہے یہ بڑی کامن ہیبٹ ہے جس کی وجہ سے بلڈ ویسلز یا خون کی جو نالیاں ہیں ان میں پرابلم آتا ہے اور دیٹ لیڈس ٹو رینل ٹربل. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اوائڈ کریں, اس سے دور رہیں. کوئی ایسے اس کے بینیفٹس ہیں نہیں کہ جس سے بندہ انکریج کرے کہ جی آپ یہ کنٹینیو رکھیں. اسی طرح اب آج کل کے دور میں ڈائبٹیز ایسا ایک پرابلم ہے جو نہ صرف بزرگوں میں ہے بلکہ ینگ جنریشن میں بڑی کامنلی پائی جا رہی ہے. سو ڈائبٹیز کو بڑا توجہ دینی چاہیے, چاہے یہ ڈائٹ کنٹرول ہے چاہے یہ ٹیبلٹ کنٹرول ہے. ڈائبٹیز جو ہے اس سے دور رہیں, اگر ہے تو اس کو بہت ٹائٹلی کنٹرول رکھیں کیونکہ یہ بڑا سلو برننگ ایک illness ہے, ایک فینومینا ہے جو کہ آپ کی کڈنیز پہ افیکٹ ڈالتا ہے, اینڈ از اندر ویری امپورٹنٹ رسک فیکٹر. جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے ان کو ساتھ ساتھ چلتا ہے ان پیرلل ہائپر ٹینشن. جن کو نہیں بھی ہے ڈائبٹیز لیکن ہائپر ٹینسو پیشنٹس ہیں یا جن کو ٹینڈنسی ہے یا جن کی فیملیز میں یہ رن کرتا ہے, دے شوڈ بی ویری کیئرفل. ان کو سالٹ ریسٹرکشن جو ہے وہ کرنی چاہیے, سوڈیم ریسٹرکشن کرنی چاہیے. یہ نمکیات وہ ہیں جو ہم اپنی روزمرہ ڈائٹ میں استعمال کرتے ہیں, ہم اس کا خیال نہیں رکھتے, اور یہ لمیٹڈ کوانٹٹی میں یوز کرنے چاہیے تاکہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے ان دا لانگ رن کنٹرول رہے. کیونکہ ان چیزوں کا آرگنز کے اوپر اور آرگنز کے ساتھ ساتھ کڈنیز ہیں تو اس پہ بڑا جو ہے وہ گہرا اثر ہے. کچھ پاپولیشن جو ہے ہماری انفارچونیٹلی ریکریشنل ڈرگز میں ہے انوالوڈ اور یہ بڑا کڈنی پہ افیکٹ کرتے ہیں, تو اس سے بڑا دور رہیں کیونکہ کچھ اسپیشل ہماری بیماریاں ہیں جو کہ کڈنیز کے اندر آتی ہیں ود دی یوز آف ریکریشنل ایجنٹس. اور بڑا ضروری ہے ایسے پلیٹ فارمز میں اس چیز کو پروپیگیٹ کرنا اور آگے پہنچانا کہ بھئی ان چیزوں سے دور رہا جائے. اس کے علاوہ جو ہے لاسٹلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ افراد ہوتے ہیں امیونو کمپرومائزڈ انڈیویجولز جن کو ہم کہتے ہیں, جن کی قوت مدافعت ہمارے مقابلے میں, جن کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے الحمدللہ, ان کے مقابلے میں وہ بڑے پرون ہوتے ہیں کہ ان کو یہ مسئلے سٹارٹ ہو جائیں. اور جیسے کہ ڈاکٹر منصور صاحب نے کہا ہے کہ پھر وہ چاہے انفیکشن ہو جو بار بار ہوتا ہے, ریکرنٹ انفیکشنز ہیں, یا اور کوئی ریزن ہے جو یا ایکوائرڈ ہے یا انہیرنٹ ہے کہ جو باہر سے آیا ہے یا ہمارے اندر ہی سوئچ آن ہو گیا ہے, وہ اس کو جو ہے ٹریگر نہ کرے اور اس کی وجہ سے کڈنیز پہ اس کا افیکٹ نہ پڑے. تو یہ کچھ چیدہ نکات ہیں جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ کون لوگ ہیں, کون سی پاپولیشن گروپس ہیں جو ایٹ رسک آف ڈیولپنگ کڈنی انجری ہیں. امید ہے کہ اس سے آپ کو تھوڑی سی تفصیل ملی ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر خواجہ, آپ نے جو ہے وضاحت کے ساتھ اسے بیان کر دیا ہے. یہاں پر شارٹ بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ کڈنی ڈیزیز کے حوالے سے یہ ہمارا سیشن جو ہے جاری رہے گا. Everyone should know the importance of preventing kidney disease. Global Kidney Foundation encourages and supports raising awareness about renal health. Support our cause and donate today. جی سامعین و ناظرین, کڈنی ڈیزیز کے حوالے سے یہ ہمارا امپورٹنٹ اور بڑا ہی جو ہے اہم سیشن جو ہے جاری و ساری ہے. ایکسپرٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر آنسر جانیں گے ہم اپنے اسپیشلسٹ سے. My name is Jessica and my question is, how do you manage chronic kidney disease patients who do not need dialysis? Thank you. جی ڈاکٹر منصور, اس پہ کائنڈلی اگر آپ کمنٹس کر سکیں تو. Thank you very much. Thanks, Jessica. I think that's a very good question. As I said, actually, in my previous answer to another question, the chronic kidney diseases could be divided into lots of stages. So 5 stages mainly, 1 to 5. Usually stage 1, 2 and 3 are managed by the primary care physicians in the community, basically, where they look into the sort of the risk factors for these patients who could progress into chronic kidney disease. The GPs usually look into monitor the urine signs for any signs of infection, protein excretion, and also the blood pressure, and review the
kind of actually intelligently review the medications that could affect the kidney problems or make kidney functions actually worse. When the kidney functions drop to less than 30% or so, the GPs usually kind of actually refer the patients across to the secondary care setting. Sometimes earlier, if they've got any other signs or symptoms that could suggest that they would actually benefit from an early specialist opinion, and that doesn't need to kind of actually wait until the GFR or the kidney function, which is usually taken as a percentage of the entire kidney function, into account. So in those cases where the GPs actually think that the patients should be referred earlier, that they would do that as so. When the kidney function actually dropped to less than 30% to almost about 15 to 10%, some patients are not symptomatic, but however, some patients actually may develop signs and symptoms of chronic kidney disease, especially with fluid retention, problems with anemia meaning actually reduction in the hemoglobin count. Kidney is really important, actually bringing the hemoglobin up, and when the kidneys are not functioning 100%, the hemoglobin count may drop, and patients may become anemic and symptomatic. And certainly actually there are also symptoms associated with fluid retention if the patients are not producing much urine. Some of these signs actually may take a while. Some of these signs may develop quite early and rapidly progress and rapidly contribute to the progression of chronic kidney disease. So patients who are not needing dialysis, it's important that they routinely attend their specialist clinics, which is usually about 2 or 3 months every now and then. They usually can actually will be reviewed by blood tests, urine tests, and also there will be review of their medications. There's usually kind of actually a holistic approach to these patients, because when I review my patients, kidney patients, I actually always let them know that anything in the body can affect the kidneys, and anything within the kidney could actually affect other parts of the body. So really important for me to actually review other medical problems that may have affected the patient between one appointment to another appointment, review the medications, and empower them, engage them, and also assess them for other sort of complications, and also review the pathway to them actually needing dialysis and prepare them for transplant. So there are lots of things that we could actually do to slow the progression of chronic kidney disease, identify the reversible causes, and if there's no reversible causes, basically to prepare them for renal replacement therapy, mainly transplant and dialysis. I hope, Jessica, I was able to answer your question. Thank you. Thank you so much, Dr. Mansoor Ali. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर उसका आंसर हम जो है वो जानेंगे अपने एक्सपर्ट से. Hello, my name is Akram, and my question is, how does dialysis work? जी, डॉक्टर ख्वाजा, इस पे अगर हाउ डज डायलिसिस वर्क? Ji Sakib bhai, thank you for your question. So dialysis is a means and a mechanism where we can wash out the toxins from our body. These are the toxins that are kidneys. We've got 2 kidneys naturally, and they tend to neutralize these toxins and then excrete them in the form of urine. And when kidneys are not able to get rid of these toxins effectively, then we need to start dialysis. Not every patient who has chronic kidney disease needs to be on dialysis, and so we say that anyone who's got a function of less than 15% and essentially has symptoms needs to be started on dialysis in time if they need to, and therefore that's a multidisciplinary approach where we are involved along with specialist nurses and a full team that make sure that this patient needs dialysis and is now ready for it. As far as dialysis is concerned, there are different kinds of dialysis, and broadly speaking, this is called renal replacement therapy. So under the umbrella of renal replacement therapy, there's hemodialysis, where the patient's blood passes into a machine. It is cleansed and it is then given back to the patient. And there is another type of renal replacement therapy, which is called peritoneal dialysis, where a tube is fitted into the patient's tummy. And we use a specialized fluid that is inserted into the abdomen through this tube, which absorbs all the acids and the toxins, and therefore we can remove the fluid, and that's called peritoneal dialysis. Before we can make such a choice, we do provide our patients, like I said, with via a multidisciplinary approach about the various modalities that I've just mentioned of, and how one may suit our patient more than the other, and how they may benefit with one more than the others. We talk about all the risks and the benefits of these. We involve our specialist nurses who also spend quite a lot of time with these patients. We provide our patients with loads of reading material and one-on-one sessions so that we can answer all their questions. And once we've decided collectively with their patients what decision they've reached, we can choose what modality and how we can provide them with dialysis. I hope this answers your question.
थैंक यू सो मच डॉक्टर ख्वाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर हम अपने एक्सपर्ट से जो है उसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। Hello, my name is Deiba and my question is what tests can be done to determine the cause and nature of the kidney disease? Thank you so much. जी डॉक्टर मंसूर, इस पे आप प्लीज अगर कमेंट्स कर दें। Thank you very much, Tiba. A very important question. I think the tests usually can actually start way back before the patient's actually even referred to the kidney specialist. So the tests usually start in the community. Could be actually the fact that you happen to go to a GP for some routine health and checkup, basically, where the GP will do some blood tests, and the blood tests usually pick up actually kidney function tests, an enzyme called creatinine, which is literally filtered through the kidney, secreted from the muscles, and filtered through the kidneys. This test has been available for decades, basically. It's an only test that we actually rely on to see whether there's any problem with the kidney functions or not. The higher the creatinine levels, the worse the kidney functions are actually. Now, over the last decade or so, we've literally been looking into percentage of the kidney function, which is actually derived from the creatinine. So you may have heard of something called GFR, or glomerular filtration rate. The normal glomerular filtration rate should be about 100%, but in some patients with kidney disease, the glomerular filtration rate actually would become lower with the progression of time. And this is where the GP will need to kind of actually identify the causes for that problem and then refer to the kidney specialist accordingly. There are also other tests such as a urine test. Actually, it's a simple, cheap, available diagnostic test which literally helps to identify any blood or protein in the urine. It's easily done. So a healthcare assistant could do that, a nurse could do that in the practice surgery. And if there's any blood and protein, the GP needs to look into it. So lots of causes of blood and protein in the urine. So not every blood and protein actually should really raise alarm bells there. But it could be a simple urinary tract infection that needs looking into. It could be diabetes, could be related with blood pressure, or could be related with more serious chronic kidney conditions that needs reviewing and that needs referred to a specialist for a specialist opinion. Then an ultrasound scan could be done actually to identify and determine the size of the kidneys. As my colleague Dr. Khawaja said, there are two kidneys. They're almost about the size of the palm of the fist, basically, and they're literally about 120 to 140 grams, and then they're literally located at the back. So the ultrasound scan is really reliable, cheap, and available procedure that could be done to assess the size of the kidneys, the symmetry of the kidneys, whether one kidney is small or the other, or any kind of actually other structural abnormalities in the kidney, such as cysts. So I would say blood test, urine test, ultrasound scan. Once you kind of actually identify there's any problems with the kidneys, the GPs could do some more tests, but most of the time, the primary care physicians will refer them to the specialist for a second opinion. And usually, we tend to kind of actually do more holistic or more sort of advanced sort of tests where we look into other abnormal causes of the kidney disease, depending on what we see and depending on the history taken for the patient. Also, in some cases, we need to consider kidney biopsy to come to a definitive diagnosis for a kidney disease. So, Tiba, I hope I was able to answer your question. Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर मंसूर, आपका जो है बहुत शुक्रिया, आपने जो है इस आंसर कर दिया क्वेश्चन का। जितने भी सामिन और नाज़रीन देखने सुनने वाले हैं, मैक्सिमम जो है ये किडनी अवेयरनेस के हवाले से ही हमारा सेशन है। इस पे जो भी आपके रेलेवेंट क्वेश्चन हो, कोई भी आप पूछना चाहें, इन्फॉर्मेशन हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, फिर हमारे साथ रहिएगा। Help us raise awareness about renal health, support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी सामिन और नाज़रीन, किडनी डिजीज़ के हवाले से, रिस्क के हवाले से और मैनेजमेंट जो है कैसे इसका इलाज किया जा सकता है और ये फिर कितना जो है नुकसानदेह है इंसानी सेहत के लिए, उस पे बात कर रहे हैं। और हमारे साथ जो है एक्सपर्ट जो स्पेशलिस्ट हैं किडनी से रेलिवेंट, और हमारे साथ जीपी ट्रेनी भी मौजूद हैं, डॉक्टर वजीहा। उनसे भी आप रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर और वीमेन हेल्थ के हवाले से इनकी स्पेशलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर अपने स्पेशलिस्ट से जो है आंसर। हेलो, माय नेम इज दीबा एंड माय क्वेश्चन इज व्हाट टेस्ट कैन बी डन टू डिटरमाइन। मेरा नाम फिरदौस रफ़ीक है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यूरिन इन्फेक्शंस और गुर्दे की पथरी का इलाज क्यों ज़रूरी है। जी डॉक्टर ख्वाजा, आप अगर इस पे कमेंट्स कर दें कि यूरिन इन्फेक्शन और गुर्दे की पथरी का इलाज जो है क्यों ज़रूरी। जी ज़रूर, थैंक यू फिरदौस साहिबा। मैं आपका जवाब जो है सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। इन्फेक्शन और पथरियाँ ये वो हस्तियाँ एंटिटीज़ हैं जिसकी वजह से गुर्दों के ऊपर जो है वो काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है।
और अगर इनका इलाज ना किया जाए, वक्त पे इलाज ना किया जाए, तो एक लॉन्गर लास्टिंग देर पा असर रह सकता है गुर्दों के ऊपर। इस असर की वजह से जो फिर कंडीशन आगे बनती है उसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में CKD या क्रॉनिक किडनी डिजीज़। CKD को अगर फिर कंट्रोल ना किया जाए तो ये प्रोग्रेस करती है और ये फिर चली जाती है एंड स्टेज किडनी डिजीज़ में, जिसमें गुर्दे जो हैं वो फेल हो जाते हैं और फिर मरीज को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है डायलिसिस की। इन्फेक्शन जो है, जहाँ तक इन्फेक्शन का ताल्लुक है, वो बज़ाते खुद समझा जा सकता है कि इन्फेक्शन है वो आपकी दफा ना होने की वजह से जिस्म के आता है और उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। बार बार अगर होता रहे तो फिर एंटीबायोटिक्स जो हैं उनको भी रेजिस्टेंस हो जाती है और आगे प्रॉब्लम्स होते हैं। स्टोन्स या पथरियाँ जो हैं उनके जो गुर्दे पे असरात हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में हो सकते हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो उसके तरीके हैं। मिसाल के तौर पर डायरेक्ट ट्रॉमा है कि वो गुर्दे की जो अंदर की लाइनिंग है उसको नुकसान पहुंचाए और जो टिश्यू है, फंक्शनल टिश्यू, वो ख़राब हो, स्कार्स बन जाते हैं। पत्थर जो हैं उनके ऊपर वो फोकस ऑफ इन्फेक्शन है, उसके ऊपर जरासीम आके बैठते हैं और ग्रो करते हैं और वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, रुकावट हो सकती है कि जो एक निज़ाम है अल्लाह की तरफ से वो ब्लॉक हो जाए और उसकी वजह से बैक फ्लो हो और किडनीज में जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर पत्थर छोटे हैं तो वो दवाइयों के रास्ते से जा सकते हैं, सोजिश को ख़त्म किया जा सकता है, एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं। अगर पत्थर बड़े हैं बहुत तो फिर शॉकवेव थेरेपी या फिर ऑपरेशन के थ्रू निकालने पड़ते हैं। उम्मीद है कि इस जवाब से आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवीद खवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर Hello, my name is Abdul Fahim and my question is how does stone disease affect kidneys and how is it treated? Thank you. जी, स्टोन के हवाले से थोड़ा सा नॉलेज तो डॉक्टर ख्वाजा शेयर कर चुके हैं। जी डॉक्टर मंसूर अली, आप अगर इस पे कमेंट्स कर सकें प्लीज। Yeah, thank you. It's a very relevant question. I think Dr. Khwaja's covered most of it actually in his talk. Stone diseases, basically, they cause problems within the urinary tract system. They cause obstruction. That's one of the main causes actually. And then once they block the kidneys urinary tract system, that can actually lead to back pressure, leads to a urinary stasis, meaning no flow of urine, and leads to obstruction, which can actually leads to decrease in the clearance of the toxins from the kidneys, as a result of which acute kidney injury, or in some cases acute or chronic kidney diseases if the patient's actually had relevant problems with stones in the past. Stones can also lead to sort of recurrent urinary tract infections because of the stasis of the urine. If the stones are present in the urinary tract system or in the bladder or in the tubes coming from the kidneys to the bladder, as a result of which actually that can lead to other systemic illness such as fever, temperature, feeling unwell, not able to pass urine, and other complications associated with acute kidney injury. Now, how do you actually treat stones? So the treatments actually could be supportive treatment, it could be quite complicated treatment in terms of actually urological interventions such as shock waves, lithotripsy, and other urological interventions, as my colleague Dr. Khawaja has already mentioned before. Whereas supportive treatment should be really drinking lots of fluids, drinking water, ensuring you keep hydrated, ensuring to have an idea of actually what are the causes of the stones, what particular stones have actually been affecting the kidneys. Lots of stones such as calcium stones, uric acid stones, calcium oxalate stones, or calcium phosphate stones, and then kind of actually modifying your diet accordingly. So this is where a holistic approach, where you need actually a urologist, a nephrologist, and a dietitian to work closely together to be able to actually identify the actual stone and then to treat the complications associated with the stone. And also literally making sure that there's some medications that could affect or could increase crystallization within the body, and that needs to be kind of actually avoided. But if it's not avoided, then you need to have some treatment to prevent the stones actually forming. There are lots of treatments. I wouldn't be going into particular causes of the stones, but there's some treatment actually that is really needed to be taken in order to prevent the stones actually causing problems. Now, as I said, stone disease could lead to obstruction, could lead to infections, and this infection could lead to renal scarring, scarring meaning actually damaged area within the kidneys, and that could all lead to chronic kidney disease, in turn ending up with end-stage kidney disease. So urological problems are also one of the important causes of people ending up needing dialysis or transplant. Thank you very much for the question once again.
थैंक यू सो मच डॉक्टर मंसूर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. और My name is Ashok Kumar, and doctor, I just wanted to understand who are at the risk of kidney disease, and as a diabetic, is there a special risk for kidney disease? Thanks. जी डॉक्टर नवीद ख्वाजा, इस पे अगर आप कमेंट्स कर सकें प्लीज. Thank you very much, Mr. Kumar, for the question. Absolutely. I think you're quite right. People who have diabetes are considered to be part of the population that we call immunocompromised. Diabetes makes you prone on many different aspects and at many different fronts to develop kidney disease, whether or not this is acute or more or less chronic kidney illness. Of course, acute, like I mentioned earlier in the talk, is something that is reversible. We usually get worried about individuals with uncontrolled diabetes who develop chronicity of illness, and therefore they tend to lose their kidney function quite rapidly otherwise. This can be prevented by proper follow-ups and with the diabetes clinic and at your GP level as well, because if you're someone who has early kidney disease, then it is something that can be stabilized with the aim to prevent further progression. And I think GPs, along with the recent developments in medicine and the introduction of many new treatment regimens, can play a very important role in helping you control your early chronic kidney disease. And of course, once the chronic kidney disease, and if heaven forbid it progresses, then we get involved as specialists at tertiary level. As I said, diabetes is one of, and as it has been mentioned earlier in the talk, that diabetes worldwide is a very common problem, and I think is one of the top problems that contributes to kidney trouble. So controlling your diabetes, as a part of your diabetes management, controlling your blood pressure, and as a part of your diabetes management, making sure that you're controlling your diet and modifying diet as according to your kidney illness is quite important in preventing any further decline in your kidney illness. And I hope this answers your question. Thank you so much Dr. Naveed Khawaja. Next question की तरफ बढ़ते हैं और फिर answer. Hi, my name is Haris, and my question is, has diet got role in management of kidney disease? जी डॉक्टर मंसूर अली, इस पे आप अगर कमेंट्स कर सकें प्लीज. Thank you, Harris. A very important question. I guess question asked a lot actually by my patients in the clinic. What has diet got to play in management of kidney disease? Now, there are lots of actually stages of kidney disease we discuss in this talk, but equally diet has actually got a lot to play in each and every stage. So I would not go with the notion that stop eating anything and everything to prevent your kidneys. No, I would actually say a balanced, healthy diet is really important for any kind of actually system in the body, including the kidneys. The kidneys actually literally work 24 hours a day, 7 days a week, and throughout sort of your lifetime. So really important to kind of actually keep hydrating. So water is really important. Again, I wouldn't actually say or quantify that drink 8 glasses of water or less than 8 glasses or 7 glasses of water. It has to be individualized to each and every patient with chronic kidney disease, because patients on dialysis may actually need less water compared to those who are, at risk of acute kidney injury, who actually need more hydration. Patients with heart failure may not need to be drinking more water. So again, it has to be individualized and really important to actually work with a dietitian, a holistic MDT approach, multidisciplinary approach to managing patients with chronic kidney disease. But that plays a very important role. So red meat, people actually do talk about red meat. How is that important? So red meat can actually increase a lot of problems within patients with chronic kidney disease, especially if they've got stone, which proteins, high animal proteins can actually increase the risk of stones in the kidney disease. So they should really be kind of actually concentrating on alternatives and maybe kind of actually plant-based proteins, which have actually literally come in the last sort of few years or so, where this is more popular with some of the patients with chronic kidney disease. Again, if you've got latter stages of kidney disease, such as stage 4 and 5, then you may want to actually be careful about how much salt you take, literally in ensuring to actually reduce the amount of salt in the diet to improve and improvise your blood pressure control long term.
Also, there are actually some electrolytes, some salts in the body, such as potassium, calcium, and phosphorus, which actually go up and down during your stages of kidney disease. And it's really important to adhere to some of the instructions by the dietitians to be able to kind of actually limit the amount of these diets which has got high concentrations of calcium or potassium, and then to kind of actually avoid the complications associated with these electrolytes or salts in the body. And then basically, when you are transplant, you have a transplant, you may be able to kind of actually come back to sort of normal life, where you're able to eat a lot of products that you weren't able to kind of actually eat when you were on dialysis or you had chronic kidney disease stage 4 and 5. But again, you need to be really careful and work with the dietitian, because there's a tendency to kind of gain weight, and that obesity could actually lead to problems such as diabetes and high blood pressure after transplant. So diet is not a simple answer to eat this or eat that or eat more salad or less meat. I think it has to be individualized to each patient with chronic kidney disease, and you've got to work with your physicians and your dietitians to be able to kind of actually do well with your stages of chronic kidney disease. Thank you. Thank you, Saris. Thank you so much डॉक्टर मंसूर, आपका बहुत शुक्रिया। हमायूं खान जदून साहब कराची से जो है आप लोगों को सलाम पेश कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं इस नशिस्त को। हमारे डॉक्टर वजीहा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चन हमारे पास पूछे हैं कि वीमेन स्पेशलिटी के हवाले से थोड़ा सा आप गाइड करेंगी कि रमज़ान मुबारक भी है, तो इसमें क्या हेल्थी डाइट जो है इस्तेमाल करनी चाहिए सहरी और अफ्तार के टाइम जो है ख़वातीन के लिए, और वैसे भी जो है जनरल पब्लिक के लिए कोई अवेयरनेस के हवाले से एक मैसेज आप दे दीजिएगा। थैंक यू इरफान भाई। डेफिनेटली देखें, रमज़ान के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें ख्याल रखना पड़ता है। ये नहीं कह सकते कि जी अब अगर रमज़ान में आप भूखे रह रहे हैं तो यू कैन ईट एनीथिंग और एवरीथिंग। इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड ऑल द टाइम। स्पेशली फोकस ऑन कि आपकी अपनी हाइड्रेशन ठीक रखें। आप सहरी और अफ्तारी के दरमियान का जो टाइम है रात का, उसमें अपनी हाइड्रेशन पूरी करनी है। और उसके अलावा भी जैसे हम पाकिस्तानी सारे लोग डीप फ्राइड चीज़ें खाने के आदी होते हैं, तो डेफिनेटली वी शुड अवॉइड दैट। वो बहुत सारी चीज़ों के लिए बेहतर है, आपकी इवन किडनी डिजीज़ के लिए, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए, आपके ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इन सब के लिए वो बेहतर है। और इवन नॉर्मल पेशेंट जिनको कोई बीमारी नहीं भी है, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद चीज़ है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स शुड बी द फोकस। और अभी बात हो रही थी रेड मीट के हवाले से, तो रेड मीट भी इतनी क्वांटिटी में लिया जाए जो एक नॉर्मल बैलेंस डाइट का पार्ट है, बट नॉट एक्सीडिंग। जो भी चीज़ आप एक्सीड करेंगे, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ। तो ये सारे काम इवन लेडीज हों या मेल्स हों, इन सब के लिए ज़रूरी है। द ओनली थिंग कि जो लोग प्रेग्नेंट हैं जिस तरह, उनके लिए फिर उनके डाइटिशियन, उनके जीपीस आपको एडवाइस ज़्यादा बेहतर करते हैं कि आप रोज़ा रख सकते हैं, नहीं रख सकते, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। फिर डायबिटिक्स के लिए भी कुछ लोगों के लिए वी एडवाइस इफ दे कांट, तो इट्स एडवाइजेबल कि वो रोज़ा ना रखें। इवन किडनी डिजीज़ में भी, जो एडवांस किडनी डिजीज़ है, उसमें हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि इफ़ इट्स सीकेडी काफ़ी एडवांस स्टेज का है, तो रोज़ा ना रखना शायद ज़्यादा बेहतर होता है उन लोगों के लिए एज़ कम्पेयर टू जो जिनकी थोड़ी कम डिजीज़ होती है। तो मेनली आई थिंक दैट शुड द फोकस शुड बी ऑन द बैलेंस्ड डाइट। और ये भूलना नहीं चाहिए कि रमज़ान में आप हर चीज़ खा लेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। I hope it answers your question. थैंक यू सो मच डॉक्टर वजीहा। चलें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक भी है, तो इसके अंदर जो है हम चाहते थे कि जर्नल जो है हेल्थ के हवाले से एक हेल्थी फूड जो है, और सहरी और अफ्तार के अंदर जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने फरमाया कि हमारे लोग जो है समोसे पकोड़े को सुन्नत समझ के खाते हैं तो बैलेंस जो है, मतवाजन ग़िज़ा रखें तो वो ज़्यादा बेटर है। यानी खाएं ज़रूर, लेकिन पोर्शन में उनको डिवाइड कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है। जिस तरह जनरल हेल्थ टिप्स में जो है हमारे जीपीज़ और डॉक्टर्स ने, स्पेशलिस्ट ने जो है आपको राय दी थी। और फिर इसके साथ साथ जो भी ये जो मूज़ी बीमारियां हैं, गुर्दे हैं या कार्डियोलॉजी के हवाले से हैं या शुगर है, स्टेजेस हैं, इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, उसके हवाले से आप अपने डॉक्टर से भी रुजू करें और फिर आप आलम दीन से भी रुजू कर लें कि रोज़ा आपको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, और इसके अंदर फर्दर जो है क्या जो है इंफॉर्मेशन हो सकती है। डॉक्टर मंसूर, मैं आपसे चाहूँगा कि लास्ट स्टेज पे आप जो है एक मैसेज दे देंगे कि ये ट्रांसप्लांट के हवाले से लोग हमारे बहुत ज़्यादा जो है
अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को, यानी अगर हम बात करें कि ऑर्गन डोनेशंस के हवाले से या डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, ज़ाहिर है इसमें एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है, लेकिन आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप भी किसी से, ज़ाहिर है आप लोगों का अगर एक्सपीरियंस है, कोई कंसर्न इस हवाले से, कोई मामलात या मालूमात आपके जहन में हो, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई कोऑर्डिनेशन हुई हो, तो इस पे अगर आप कमेंट्स कर दें तो फिर हम इस सेशन को क्लोज करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स इरफान भाई। जैसे मैंने पहले भी कहा, आपने भी कहा, आपके पेशेंट्स ने भी बताया उनकी स्टोरीज, अपनी स्टोरीज, पर्सनल स्टोरीज के ट्रांसप्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसप्लांट इज एक्चुअली द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स विद एंड स्टेज किडनी डिजीज। लेकिन ये कि हमारे पेशेंट्स जो है मतलब काफ़ी लंबा वेट करते हैं। तो नेशनल एवरेज वेटिंग टाइम इज ऑलमोस्ट अबाउट 3 to 4 years फॉर पेशेंट्स एक्चुअली ऑन द ट्रांसप्लांट लिस्ट। कोकेशियन से क्योंकि उनका पूल ज़्यादा बड़ा है तो उनको जल्दी मतलब ट्रांसप्लांट मिल सकता है, ऑलमोस्ट अ मीडियन ऑफ अबाउट 500-600 days। लेकिन जो ब्लैक एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है उनको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ता है। आई हैव ओन पर्सनल पेशेंट्स, जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट 16-17 years की मेरे पेशेंट्स ये हैं कि वो लंबा वेट करते हैं, क्योंकि पेशेंट्स को मतलब उनको डोनेशन या उनकी मैच नहीं मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ऑर्गन पूल, जिस तरह आपने फरमाया कि ऑर्गन डोनेशन, जो डिजीज ऑर्गन डोनेशन, वो उसको इंक्रीज करें। लाइव डोनेशन जो आप फैमिलीज एक दूसरे के लिए कर लेते हैं, जैसा कि आपके अजीज भट्टी भाई ने बताया था कि उन्होंने उनके भाई ने उनको डोनेट किया था। लेकिन जो डिजीज ऑर्गन डोनेशन है अभी तक हमारी कम्युनिटी में इतना प्रेवलेंट नहीं है। और मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मेरी यही मतलब इल्तिमास से इल्तिजा है कि लोग इसके बारे में एटलीस्ट सोचें इसके बारे में। हमने अवेयरनेस काफ़ी किया है यूके में, बहुत सारे ऐसे कोलीग्स से, फिजिशियंस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो मैंने कम्युनिटीज़ में काम किया है जहाँ हमने बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि आप एक लाइफ को सेव कर रहे हैं, आप काफ़ी लाइफ उसके साथ अफेक्टेड होती है, उस पेशेंट्स के साथ, उसकी फैमिली के साथ। ही कुड एक्चुअली बी, ही और शी कुड बी दी ओनली सोल ब्रेडविनर फॉर दैट फैमिली। तो बहुत इंपॉर्टेंट कि इसके बारे में हम मज़ीद बात करें, बल्कि इसके बारे में एक अलग से सेशन होना चाहिए जो आप मतलब वो करें। तो मैं ज़रूर आऊँगा, अपने कॉलेज को भी इन्वाइट करूँगा इसके लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस्लामिक हमारे स्कॉलर से काफ़ी फतवा भी है कि मतलब आप दे सकते हैं, आप कर सकते हैं ऑर्गन डिसीज डोनेशन। तो I think the jury is still out, लेकिन I'm sure कि इसके बारे में बहुत सारे awareness within the community हमें create करनी चाहिए, ताकि organs are actually available for patients who need it at the right time. Thank you. आप म्यूट पे हैं। Me, Mrs. Khawaja from Serbia. Very nice program, mashallah. Thank you so much, Mrs. Khawaja. क्योंकि नवीद ख्वाजा साहब हैं तो कोई इनके जानने वाले जो है वो कमेंट दे रहे हैं। थैंक यू सो मच जनाब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर नवीद ख्वाजा का। डॉक्टर मंसूर अली जो है ये स्पेशलिस्ट हैं, रेनल से रेलिवेंट हैं और खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं सर्विसेज नोटिंगम के अंदर, ब्रेडफोर्ड के अंदर। डॉक्टर वजीहा तहनियत जो है वो भी हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने भी खातिर ख्वाह इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाई। इस सेशन को यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। मुझे अपने मेज़बान एम इरफान ताहिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह 26 को कार्डियोलॉजी के हवाले से एक भरपूर सेशन लेकर आपकी खिदमत में आएंगे। जो भी आपके उससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन हो हार्ट डिजीज़ के हवाले से, वो हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि हम जो है स्पेशलिस्ट से जान सकें, और आपको कोई भी, आपके जानने वालों को कोई भी अमराज लाहक हैं तो उस पर इंशाल्लाह खातिर ख्वाह जो है गुफ्तगू की जा सके, आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके। इस मैसेज को जो है वाइडर आप जो है स्प्रेड ज़रूर कीजिएगा, ये एक सदका जारिया भी है। और हम शुक्रगुजार हैं शबी अहमद साहब के और डॉक्टर इरफान अख्तर के, अपने की पूरी टीम, जो भी एग्जेक्टिव हैं उनके या उनके ऑफिस बैरियर के लोग हैं, उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया और ये कीमती लोग हमें यहाँ पर दिए, इनका बड़ा वैल्यूएबल टाइम होता है। अपने मेज़बान एम इरफान ताहिर को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम, नए अज़म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह निगहबान।